हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज का केस स्टडीज है फर्स्ट चैप्टर से बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में एक टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का जो केस स्टडीज है उसमें एक पैसेज, एक इवेंट बताया जाएगा, उससे आप लोग को फाइंड करना है कि कौन किस लेवल में काम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Ever felt like your department is understaffed or perhaps there's a lack of cooperation from others? You're not alone. Rishitosh Mukherjee, a recent hire at AMV Limited, a refrigerator manufacturing company, experienced this firsthand. Rishitosh walked into a department that was understaffed and lacking in cooperation from others. The lack of manpower meant longer hours, missed deadlines, and a declining morale among his team. The absence of cooperation from other departments added to the problem, creating a recipe for inefficiency and chaos. But Rishitosh, being the problem solver he is, refused to let these issues define his department. His first step was to ensure his team had the right number of people. He advocated for his department, making a convincing case to the higher-ups about the need for additional staff. After a few rounds of discussion, he managed to secure the approval for hiring. But Rishitosh didn't stop there. He knew that collaboration was the key to success in any organization. He reached out to other departments, breaking down the silos that had formed over time. He initiated regular interdepartmental meetings, fostering open communication and a better understanding of each other's roles and responsibilities. The results of Rishitosh's actions were nothing short of transformative. The once understaffed department now had the manpower to meet deadlines and deliver quality work. The improved cooperation between departments led to a smoother workflow, fewer misunderstandings, and increased productivity. In summary, Rishitosh tackled the twin issues of understaffing and lack of cooperation head-on. He ensured that his department had the required manpower and that it worked in harmony with other departments. His actions led to a more efficient, productive, and harmonious work environment at AMV Limited. The story of Rishitosh Mukherjee serves as a powerful reminder that challenges can be opportunities. With the right attitude, clear communication, and a little bit of initiative, it is possible to turn around a struggling department and make it a shining example of efficiency and collaboration. This is the case study. पहले एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द लेवल एट व्हिच ऋषिकेश मुखर्जी वाज वर्किंग, और सेकंड क्वेश्चन है, also state 3 more functions required to be performed by ऋषिकेश मुखर्जी at this level. क्योंकि मिस्टर ऋषिकेश मुखर्जी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ही इज द बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हेड है, इसलिए ये मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं। और मिडिल लेवल में जो रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शंस उनको करना है, परफॉर्म करना है, वो है टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टू एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, to assign necessary duties and responsibilities to the employees of their respective departments for implementation of the plan. Number 4, to motivate employees of their respective departments to achieve the desired objectives, to cooperate with other departments for smooth functioning of the organization, etc. etc. So, आज के लिए इतना ही। खत्म करने से पहले 2 चीज बताना है। एक, हम लोग अगले 4 तारीख से 4 नवंबर से हम लोग अकाउंटिंग का फुल कोर्स लाइव ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे आप लोग हफ्ते में 2 दिन रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ये अकाउंटिंग का क्लास चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना में। आप लोग को इन्वाइट करते हैं ये ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करने के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लिंक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग का दोस्त के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए, जिससे कि जब भी नया नया वीडियो आएगा आप लोग पास पहले पहुंच जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए। धन्यवाद।